गुड इवनिंग। आज टुडे इज़ 29th मार्च 2017। नाउ डिस्कस 2015 का जो पेपर था यूपीएससी का, तो हम जीएस पेपर जो फिल्म्स का, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया था पहले, तो अब हमने 70 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन व्हिच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स हम यूज करते हैं इन हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। is if pure hydrogen is used to as a fuel, the fuel cell emits। okay, तो आंसर क्या होगा? देखिए, हमने फ्यूल को कौन सी हाइड्रोजन रिच फ्यूल और ऑक्सीजन हमने यूज करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये प्योर हाइड्रोजन हमने यूज करते हैं तो एज ए फ्यूल की तरह, तो द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर बाई यूज करेंगे हीट को एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स। ओके, तो और कोई नहीं होगा। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइस, ये भी नहीं होगा। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरिंग करंट, नो। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा तो एक होगा। ओके, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 71 का, कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, क्या होगा आंसर? ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, ये होगा आंसर कलमकारी पेंटिंग। ओके, ये नहीं होगा। ये हैंडमेड ड्राइंग ऑफ बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, ये नहीं होगा। ये ब्लैक पेंटेड भी नहीं होगा क्वेश्चन वाला का, ठीक है। हैंड पेंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ए। ओके, ठीक है। ये हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया के कॉटन का। ओके, तो उसके बाद देखिए 72 का, which one of the following best describe the main objective of seed village concept। नॉन रिसीव करते हैं मेन which of the following the best describe the main objectives। जो सीड विलेज कॉन्सेप्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो कौन सी जो डिस्कस करते हैं, सबसे जो अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others। okay, the seed village concept means involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to other at appropriate time and affordable cost। ठीक है, तो बी होगा आंसर। देखिए, तो ये भी नहीं होगा। इनकरेजिंग द फार्मर्स, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए, आर्म मेकिंग सम विलेजेस का एक्सक्लूसिवली, ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्रोडक्शन तो आइडेंटिफाइंग, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ए, बी होगा। ओके, इन्वॉल्विंग फार्मर्स ट्रेनिंग। ओके, तो 73 का, देयर हैज बीन डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। ओके, which of the following action can be taken by the government to reduce the deficit। ठीक है, देयर हैज बीन क्या देखते हैं हमने, परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर हम देखते हैं। तो आफ्टर ईयर, ठीक है, आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट, कम करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, rationalizing subsidize expanding industries। तो आंसर होगा 1 and 3, reducing revenue expenditure and rationalizing subsidies। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 का, which of the following have been accorded geographical indication status। देखिए, Benares, brocades and sarees and तिरुपति लाडू। तो आंसर होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ स्टेटस, तो 1 and 3 होगा। ओके, राजस्थान ये नहीं होगा, ठीक है। 1 and 3 विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ओके, ठीक है।
Which of the following statements are correct? With reference to Indian Renewable Energy Development Agency Limited, which of the following statements correct? It is pure limited government company. It is a non-banking financial company. It is correct. ठीक है, देखिए with reference to Indian Renewable Energy Department Agency Limited, which of the following statements correct? It is a public limited government company. Okay. 76. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been launched for क्यों लॉन्च हुआ है? Promoting financial inclusion of the country, promoting self help group नहीं, promoting household loan नहीं, promoting financial help marginal नहीं, promoting financial inclusion of in the country with reference to the 14th Finance Commission. With reference to the 14th with the 14th Finance Commission जो हुआ है, with which of the following statements are correct? Okay, देखिए it has increased the share of states in the central division from 32% to 42%. It has made recommendations concerning sector specific grants. तो आंसर होगा and 1 होगा आंसर. Okay, with reference to 14th Finance Commission क्यों हुआ? It has been increased the share of states in the central divisions from 32% to 42%. Okay, the declaration. Okay, the declaration recently in the news. Okay, that it is related to the affairs of BRICS. Okay, answer होगा B, not SN. BRICS होगा answer. A decrease in a tax to GDP, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Showing economic growth rate and less quotable distribution of national income. तो ये क्या होगा आंसर? डिक्रीज टैक्स टू जीडीपी, तो टैक्स कम कर रहा हो रहा है इन कंट्री में. क्या कहते हैं ना, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, नाइदर 1 2 शोइंग इकोनॉमिक रेट. ओके, 80 का देखिए इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट स्पेसिफिक रीजन्स. देखिए इन द साउथ अटलांटिक में हमने देखते हैं क्या ना, एंड साउथ पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक में हम रीजन में हम देखते हैं क्या, इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट नहीं होता है. देखिए साउथ अटलांटिक में एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक में पैसिफिक रीजन में हमने क्या देखते हैं ना, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में. देखिए इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन्स में इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होता है. ओके ओके, तो व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं होता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ सेल्डम occurs. ओके, बी होगा आंसर. Which one of the following pairs of states of which of the one of the following pairs of states of India indicate the easternmost and westernmost state? देखिए वेस्टर्न होगा अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात. ओके, तो देखिए consider the following statements regarding the direct principle of state policy. The principles spell the socio-economic democracy in the country. Okay, the provision contained in these principles are not enforceable by any court. The socio-economic democracy and provision contained in these principles are not enforceable by any court. Okay, both 1 and 2. Okay, next. In the interior of 8 core industries, which one of the following is given the highest weight? Coal production नहीं, fertilizer नहीं, steel नहीं, electricity generation. Okay. Which one of the following national parks is unique is being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? Which of the following national park considered unique is being a swamp with floating vegetables? vegetable देखते हैं that supports a rich biodiversity. ठीक है, biodiversity रिच करने के लिए तो भितरकनिका नेशनल पार्क नहीं होगा. Swamp with floating vegetable. Okay, देखिए कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क. Okay,
85. Which of the following statements is correct regarding National Innovation Foundation India? Foundation India. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग क्या, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, NIF इनोवेशन फाउंडेशन जो है ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक होगा आंसर, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट का। What can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? What can be impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer हमने यूज करते एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur. Increase in the acidity of soil can take place, leaching ठीक है। तो increase in the acidity of soil can take place, leaching the nitrate to the groundwater can occur. See your answer. With reference to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) and the Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which of the following statements is correct? Nature and Natural Resource. Convention on International Trade and Endangered Species and Wild Fauna, ठीक है। तो IUCN for Conservation Nature and Natural Resources IUCN organ, the National United Nations and the CITES sites the international agreement between the governments नहीं होगा। तो IUCN runs thousands of failed projects around the world to better manage the natural environment, okay। Answer do and sites, okay। Sites is legally binding on the states that have granted it, but this convention does not take place of national laws. So 2 and 3. The fear of remunerative price of sugarcane is approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs, okay। What explain the eastward flows of the equatorial counter current? क्या एक्सप्लेन करते हैं द ईस्टवर्ड जो फ्लो करते होते हैं काउंटर करंट? कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, कन्वर्जेंस होते हैं, ओके। तो कंसीडर द फॉलोइंग फेयर्स प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लोकेशन श्रीशैलम नल्लामला हिल्स, आंसर होगा 1 ओनली, ये नहीं होगा, ओके। तो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू Rawat सत्याग्रह, रेफरेंस टू रावलाट सत्याग्रह, चार्ज दे दी, चार्ज देना पड़ेगा। With reference to Rowlatt Satyagraha, which of the following statements is correct? The Rowlatt Act was based on the recommendation of the Sturdisan Committee. 1 is the answer. And the following which of the frequently mentioned in the news, the outbreak of Ebola virus recently Guinea, Sierra Leone and Liberia, okay, B. This refers to the fly ash produced by the power plants using the coal and fuel. The following statement is correct. Fly ash can be used for production of bricks and building construction. Fly ash can be used by a replacement for some of the Portland cement, okay. So 1 and 2.
So with reference to dagong, ठीक है, with reference to dagong, a mammal found in India. With reference to which of the following statements are correct? It is herbivorous marine animals. Okay, it is found along in the coast of India. No, it is illegal protection or protection under section 1 of the Wildlife Protection Agreement. Okay, it is 1 and 3 and answer. Who is the of the following who was economic critics of colonialism in India? Okay, economic critics. Okay, तो क्या आंसर होगा 1, 2 and 3? तो नवराज जी सुब्रमण्य Iyer and Arsidat. 1 to 3. Which one of the following issues the global economic prospects report periodically? The World Bank. Global economic prospects, the Asian Development No, the step D hoga, the World Bank. Which one of the when the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis points, which of the following is likely to happen? Okay, India's GDP growth rate increased drastically. The ratio is 50 basis points में जाएगा जब इस पॉइंट में क्या होगा ना, scheduled commercial banks में cut their lending rates. Which with reference to the use of nanotechnology, हमने nanotechnology यूज करते हैं in health sector में. Which of the following statements is correct? ठीक है, तो targeted drug delivery is made possible by nanotechnology. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Both 1 and 2. In India, markets in agricultural products are regulated under the कौन करते हैं Essential Commodity Act, Agricultural Produce Market Committee Act. ये हम नहीं जानते हैं. 100 का देखिए. Which one of the following is national aquatic animal of India? Gangetic dolphin. So आज का एक डिस्कशन अब यहाँ पर ही हो गया है, तो आप समझ गया होगा होंगे. So thank you.